गुड मॉर्निंग अगेन। मैं भी निकलने को तैयार हूँ। मैंने अपने बाइक के कंसोल पे रूट कर दिया है टू डॉन बॉस्को म्यूजियम। पहले हम वहाँ जाएंगे, फिर जाएंगे बिशप बीडन फॉल्स जो कल नहीं हो पाया था। मेरे होमस्टे के ओनर ने बहुत ही बढ़िया से मेरे लिए एक हैंड मैप बना दिया जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। अभी मेरे को इजीली पिक्चर हो पा रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। कल मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने पहले मैप में सर्च किया डॉन बॉस्को म्यूजियम, वो एक दूसरा जगह दिखा रहा था। एक्चुअल म्यूजियम जो है दैट इज डॉन बॉस्को सेंटर फॉर इंडिजिनस स्टडीज, वही है एक्चुअल म्यूजियम। दूसरा जगह जो दिखा रहा है डॉन बॉस्को म्यूजियम वो क्या है पता नहीं। तो ये एशिया का लार्जेस्ट कल्चरल म्यूजियम है। डिस्टेंस है 7 किलोमीटर और टाइम लगेंगे आधा घंटा। सो लेट्स गो। पार्क कर दिया मैंने वहाँ पे। एंड ये सेक्रेड हार्ट थियोलॉजिकल कॉलेज है और इसके सामने है म्यूज़ियम। ये है एंट्रेंस। 100 रुपये का एंट्री लगता है और उसके साथ आपको ये एक पैम्पलेट मिलता है, इसमें म्यूज़ियम के बारे में सब कुछ लिखा है। सो चलिए अंदर चलते हैं। तो अभी हम म्यूज़ियम से निकलने के लिए तैयार है और काफ़ी टाइम लग गया। 1:34 PM हो चुका है। 7th फ्लोर का ये म्यूज़ियम है और बहुत बढ़िया है। काफ़ी नॉलेजफुल और इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर। आपको पूरे नॉर्थ ईस्ट का नॉलेज हो जाएगा इसमें। तो वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं था, फोटोग्राफी अलाउड था और मैंने सारे फ़ोटोग्राफ्स ले लिए और आपको स्लाइड शो देखने को मिल चुका होगा। अभी हम चलते हैं टुवर्ड्स बिशप बीडन फॉल्स और मौसम आप देख सकते हो कि एकदम बदल चुका है, पूरा क्लाउडी हो गया है और ठंड भी लग रही है। कभी भी बारिश हो सकता है, कभी भी। व्यू देखो वैली का,
अच्छा वो फॉल्स रहा उधर, तो हमें इधर जाना होगा। इधर तो घर है, तो लेट्स गो डाउन। मेघालय टूरिज्म वेलकम टू बिशप एंड बीडन फॉल्स। वाह, ये है बिशप बीडन फॉल्स, वो छोटा वाला है और वो बड़ा वाला है। वंडरफुल। माय बाइक, दिस इज द बोर्ड ऑफ बिशप एंड बीडन फॉल्स, और ये रूफटॉप व्यू ऐसा है। ये बिशप फॉल्स है एंड दिस इज द सिटी व्यू and this is the Beadon Falls. On that note, सेइंग गुड बाय टू बिशप एंड बीडन फॉल्स। ऊपर से अच्छा व्यू आता है, ऊपर से जाकर आप देख सकते हो। मैं ऊपर से देखा था, मैंने पहले आपको नीचे से दिखाया फिर ऊपर से दिखाया, तो ऊपर से बेटर व्यू है। तो अभी हम जा रहे हैं मॉफलैंग सेक्रेड फॉरेस्ट। Hello. You come only you? Yeah, only me. So you will visit the sacred forest inside? Right, yes. So here we provide with a local guide inside the forest. Okay. And it is compulsory. Mm-hmm. So you have your camera, you will use it? Yeah. Only that GoPro, I think? Yeah, only GoPro. Only GoPro. Okay. 500 in total. 20 plus 30 entry, 20 Okay. parking, Okay. and 350 for the guide will be 400 in total with the guide. Okay. So camera is 100, it will be 500. Okay. So where will I get the guide? From the parking, 1 minute from here you will reach. There is another counter there, so just show this ticket that I will give it to you. Uh-huh. The guide will just join you from there. Okay, sure. वो सामने फॉरेस्ट है, वही होगा। तो वो पार्किंग है, पार्किंग से हम उतर के नीचे आ चुके हैं एंड दिस इज़ द वे टू द सेक्रेड फॉरेस्ट। मैंने कई जगह पे सुना था, देखा था कि वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन अलाउ कर रहे हैं। मैं आपको अपना टिकट दिखाऊंगा। देर अलाउइंग। गोप्रो के लिए मैंने पैसे भी दिए 100 रुपये। एंट्रेंस का इंस्ट्रक्शन जो है वो कुछ ऐसा है, पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। और थोड़ा जूम कर देता हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड दिस इज़ द एंट्रेंस टू द फॉरेस्ट। पे लिखा हुआ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। आई थिंक बाहर वीडियो बना सकते हैं बट अंदर नहीं। दैट्स हाउ इट इज़। टिकट में तो लिखा था वीडियो कैमरा का अलग, ड्रोन का भी अलग है। आई थिंक बाहर से अलाउड होगा, कैसा क्या पता नहीं, पूछने से बताएंगे शायद। गाइड इज़ कमिंग हियर, वो दूर चल के आ रहे हैं गाइड। सो उनके साथ हम अंदर जाएंगे और सेक्रेड फॉरेस्ट देखेंगे। आई थिंक फोटो वीडियोस पे अलाउड नहीं होगा, तो मैं फ़ोटो खींचूंगा सिर्फ। First of all, I wish you a very good afternoon to you and welcome you to Mawphlang Sacred Forest, and my name is Maxwell,
have been born and brought up in this village where we known as the Mawphlang village. And this forest is under the Mawphlang kingdom, and where this forest we known as a sacred forest. Okay, and this forest stands here more than 800 years old or 1000 years old. And this forest here has been divided into 3 parts. And where the first part they call as Alau Turkang, that is a first part. And this is the second part that they known as the Pepandi. And where the last part of this forest they call as Alau Nongkenri. And why this forest they call as sacred? Because we believe that there's a deity inside the forest. Where the name of a deity we call as Labasa. And here in the olden time, we used to perform the ritual also. And once we perform the ritual, we used to sacrifice things by the animal. Where that animal we used to sacrifice things by the bull, where that bull should be a pure reddish brown bull. But nowadays this ritual we never perform it here anymore. But nowadays this ritual has been shifted outside of this forest. On top of that hill we still perform this ritual till date, but not by the bull. Nowadays by the cock, a rooster or a hen. It's mean a murga or a murgi like that. And the area of the forest is around 80 it's around 80 hectares, almost to 200 acres. And this forest we known as the evergreen forest, because why? It's green throughout the year. And this forest we have our own local name where we call as Lau Kentang. Lau means forest, Kentang means sacred. In Hindi we known as Pavitra jungle. And when I say Pavitra, I hope you understand the meanings of Pavitra, right? And please don't take anything from this forest. So if you take anything from here, so we the local guide, we cannot do anything for you. Or we cannot take the responsibility. But we believe that the deity of the forest will give punishment directly for that person. It may be like kinds of a curse. It may be a bad luck, maybe a disease or a sickness like that. So inside the forest we have different varieties of tree. And we have lots of medicinal tree. And there's a ritual place, there's a preparation place, there's a landmark stones, and then there's a ritual place, preparation place, landmark stones, etc. So inside the forest that videography is strictly prohibited. We don't allow to take videos, only photos only. But even photos also there are some part that we don't allow to take photos. But that so in that place I will let you know. Okay, in the adjoining areas of the ritual place we don't allow people to take photos or videos also. Okay, and see the stones where we known as the monolith. I think I've seen a lot of these stones, right? Here in Meghalaya. So why our ancestors they erected this one? They erected these stones because in the olden days we don't have our own script. So let people know any kind of place, they just erect by these stones only. And remember this stone, it has different type. There's a ritual there's a ritual stone, there's a religious thing, there's a memorial, there's entrance, a divorce, and a resting place monolith like that, etc. And remember, in these monolith are represented for the genders of the male and the female. The 3 standing stone, it represented for the genders of male, where the flat stone, it represented for the genders of female. Okay, where this 3 standing stone, the taller one we call as the uncle, where the middle one we known as the nephew, and the last one we known as the brothers. And where the flat stone we known as a female, where we known as the mother. And the leg of the flat stone we known as the children, where it shows to the people that here in Meghalaya, we are still following this matrilineal society. And I say it's matrilineal. I hope you understand the meaning. I hope you understand the meaning of matrilineal, right? Matrilineal. Yeah, where the dominance of the families will be a woman here. Oh. Okay, the like here the dominance would be a woman. Okay, but in the society will be a man. But in your state you are following this patrilineal, right? The dominance of the family also will be a man. Even in the society also will be a man, right? So those who don't know that one, in the ritual place I will explain to you. Okay, so remember inside the forest that leave nothings, only your footprints as a forest memories, and take nothings, only the memories. The memories I will take from this forest is just to click picture only. So that will be a memory. So hope you clear, right? Yeah. Now we'll enter inside the forest.